Beta, good morning. Class, good afternoon. Good morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let others also come. I think civics chapter we have completed. Chapter 2. Class, Yes, ma'am. chapter 2 civics we are over with. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, don't know. Good. Don't know. Okay, this is a very good answer. Akshat, Yes, ma'am. you have not attended the classes, previous classes. Yes, ma'am. Okay, that is right. Good morning. Sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Bhumika Beta. Fine. Tell me where exactly we were in this chapter. We were doing that points. We were doing that worksheet. Which worksheet? Ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Kartike. No, Bhumika, I want to know civics chapter 2 that we started. How much we have Yes. covered in chapter 2? Are Ma'am, we only one page left. last page is left, Yes, right? ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. Yes, ma'am. Fine. So we'll complete that one. Okay. Ma'am, we are doing worksheet Yes, ma'am. also. Worksheet, you were Yes, ma'am. supposed to send the answers to me. मैम only मैम वो तो भेज दिए. Yes, Submit, ma'am. but not everyone has sent, no? Ma'am, you can scold them. Scold them. I can scold them. Yes, ma'am. Will it solve any problem? Tell. No, You ma'am. can be. They are least bothered. They don't bother only. Yes. Ma'am, you said us to do till 12 only. I know, beta. Just getting the book open for you people. इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है. How to get this? मैम आपने वो हिस्ट्री प्रेजेंटेशन भेज दी थी ग्रुप पे. हिस्ट्री की प्रेजेंटेशन शायद बच्चे नहीं भेजी थी. देखो. तो मैम भेज दीजिएगा प्लीज. ओके. थैंक यू. क्या हो रहा है?
So you people have the books with you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So keep your books open. Yes, ma'am. Hmm. Fine. Good morning, ma'am. Good morning, Abhishek. Chaliye, can Ishika read the last page for me? See, in this last page, they are simply telling you that though when we talk of the local self-government representatives in India, we have more than 36 lakhs representatives for the local self-government, which is, in comparison to any country of the world, it is the largest number. Though the provisions that were made after the amendment of 1992 in the constitution for the local self-government, still the country has to go a long way, because the local self-government is not actually able to exercise the powers that they have been assigned. Right, class? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Ishika, ma'am. सुनो now. Read out, beta. You have the book with you, no? On page 26. Yes. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities, etc., all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. It has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sahabs are not Gram Sabhas, beta. Gram Sabhas are not held regularly. Most state governments have not transferred significant powers to the local government, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the ideal of self-government. Okay, this is what you have, right? Right, class? Yes, ma'am. Anything in this which is not? Yes, ma'am. They are simply telling that we need to ensure, overall participation of the people, and moreover, though it is mandatory to hold meetings and everything, but still the local self government is not following the directions that have been given by the court, right? Right, Yes, class? ma'am. So this is what you have in this chapter. Yes, ma'am. Please tell anything that you have not understood in this whole chapter. And if all clear and understood, we'll start with the question answers, right? Yes, Chalo. So we'll start with the NCERT questions. I hope you all have the books with you. Yes, yes, ma'am. Read out the first question. Akshat. Akshat Sharma. Arin. Arin Maurya. Ha, beta, read the first question that is given in the book. Locate the following state on the blank outline political map of India: Manipur, Sikkim, Chhattisgarh, and Goa. Okay, map part. Map part you all need to do. Will you be able to do this map on your own? Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. You have to locate Manipur, Sikkim, Chhattisgarh, and Goa, right? Yes, Then, ma'am. Yes, ma'am. then you have the next question of again world political, where you need to shade any 3 federal countries other than India. Yes, ma'am. Fine. So will you be doing it on your own now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You all need to show this to me in the next class that we have. Like tomorrow again, I think we have a class. Right? Okay, ma'am. Chalo, that's good. Okay.
फाइन. मैम जिस कॉपी में मैम वर्कशीट करी थी उसी कॉपी में कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, उसी में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम चैप्टर 1 के भी करने हैं? चैप्टर 1 के कोई मैप है ही नहीं है सच, जो है नहीं वही. मैम क्वेश्चन आंसर. हाँ बेटा करेंगे बिल्कुल, वो अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे यस अभी. मैम. हाँ. ओके मैम. Now I'm coming to the third question of the chapter. We need to point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to, and one feature that is different from that of Belgium, right? यही तो है. यस मैम. Yes, ma'am. So who will tell the answer? मैम वो वाला जो मैम ब्रुसेल्स में कैपिटल सिटी में मैम इक्वल था मैम सीट्स मैम हाँ. कैपिटल एंड कंट्री में. कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी हुई है रीजनल और लोकल गवर्नमेंट्स को बेल्जियम की तरह हम इंडिया में. ये तो सिमिलैरिटी हो गई. और डिफरेंट पॉइंट क्या हो गया, डिफरेंस का पॉइंट क्या हुआ, क्या चीज सिमिलर नहीं है? मैम कम्युनिटी गवर्नमेंट. नहीं, कम्युनिटी गवर्नमेंट के अलावा बताओ क्या है. बताओ. मैम 1 मिनट. हम्म. मैम मैम powers were given to states and all. Ma'am, they were subordinate in our country. State are subordinate to the country. And in Belgium, they are not subordinate to the central government. हमारे कंट्री में भी नहीं है बेटा, हमारे कंट्री में भी नहीं है. हमारे कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर्स है कि नहीं है भाई? Yes, ma'am. पर हमारे जैसे जैसे जो बेल्जियम है, बेल्जियम में फाइनेंसेस जो हैं और बाकी जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं. पर इंडिया में ऐसा नहीं है. इंडिया में फाइनेंस के लिए और जो नेशनल मैटर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं. ठीक है भाई. इंडिया Okay, ma'am. गवर्नमेंट बजट पास करती है. Yes, ma'am. उस बजट पासिंग में क्या होता है, जो फाइनेंसेस देती है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को देती है ना. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हु विल टेल? कौन बताएगा बच्चे? Ma'am, may I try? हाँ बताओ बेटा. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, federal form is the government where there is a sharing of power between union and state government in federal form, हम्म. and ma'am, in unitary form, the power is with the union government and there is no role of state government. And हाँ, in unitary form of government you are telling, no? yes, ma'am. Fine, fine. Yes, fine. ma'am. And federal form example India, हम्म. and ma'am unitary form example Sri Lanka. ठीक है. पर अगर हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जहाँ पे जैसे उसमें आप देखो अगर कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सिंगल सिटीजनशिप है, और जो आपका फेडरल फॉर्म है अमेरिका जैसे कंट्री में वहां पे डुअल सिटीजनशिप है. जैसे एक कंट्री की है और दूसरी जो उसकी सबऑर्डिनेट स्टेट है उसकी है. ठीक है. Yes, ma'am. पर अगर आप अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लो तो हमारे कंट्री में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता है. हमारे कंट्री में एक ही लेवल ऑफ सिटीजनशिप है. ठीक है. Yes, ma'am. फाइन. Okay, do I need to repeat these points or you will do on your own? Do on Ma'am, your we will own. do it, ma'am. We will do it. हाँ will do. Okay. बेटा कार्तिक जब हम कहते हैं हम खुद से कर लेंगे तो हम कहते हैं we will do on our own, on your own. Oh, Got it? okay, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, कह रहा है state any two differences between local governments before and after the constitutional amendments in 1992. See, there are 5 bullet points in your book where you have the amendment wala thing, no? When on the decentralization topic. Yes, ma'am. हाँ,
So their 5 points are given. You need to specify all those 5 points. ठीक है? I mean, which question? Fifth question I am talking about. They have Okay, asked ma'am. only two differences. Local government में before and after the amendment. ठीक है? Before amendments वो सारे points होंगे जो कि after amendment हुए थे. ठीक है? After amendment जो भी changes हुए हैं उनके opposite points जो है वो आपके before the amendment होगा. जैसे elections were not mandatory. State election commission was not there before the amendment, right? Yes, ma'am. Are you getting me? Okay, Bhumika, can you read one point so that I can tell you that what provision was not there before the amendment? The first point of the amendment, batao. Yes. बताओ बेटा. Ma'am, actually, I don't have the book. My book is actually I cannot find. Anybody who has book? Ma'am, me. Yes, Karthik, read. Ma'am, now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. हाँ, तो इसका before लिखेंगे. There was no compulsion of regular elections for the local bodies. Second point पढ़ो बेटा. Karthik, second point. 1 minute, ma'am. Ma'am, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. Before amendment, it was this provision of seat reservation was not there for the OBC. ठीक है? ठीक है? मतलब मैं अपोजिट करके लिख देना सबको. हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. I hope Okay, you ma'am. got this. Yes, ma'am. Do we need to Yes, discuss ma'am. all the points, or this is sufficient? You will do on your own. Ma'am, this is Ma'am, we'll do sufficient. it. We'll do Ma'am, it. we on will our do own. it on. Ma'am, On but our- there are only 5 points. Only 5 only you have to do. Okay, Okay, ma'am. fine. Yes, Now- ma'am. Come to the 6th question. Fill in the blanks. पढ़ो. ये भी करना है? हाँ, अरे Yes, ma'am. book नहीं में मैम, कॉपी में. book में कर लो. हाँ, yes ma'am. Okay, ma'am. Since the United States is a dash type of federation, all the constituent states पहले have बताओ equal क्या होगा, power. किस टाइप की फेडरेशन है यूएस में? Ma'am, unitary. Holding Unitary. Yes, coming together. coming together. Ma'am, holding together. Since the Coming Sorry. together. US Coming together. coming together Coming type together. of federation, हाँ. All the अरे, constituent states have equal powers and states are dash vis-a-vis the federal government. Stronger, States are strong. हाँ. Then the federal government, but India is a dash. Yes. Sorry, India is a Holding. dash type of federation. Holding together. Very Holding good. together. And some states have Holding together. and some states have more powers than others. In India, the dash government has more powers. Central. Central. Central government. Very Central. good, beta. Very good. Very good. what is the answer of second blank? Second is Strong. stronger. हाँ, strong. Okay, ma'am. Right? Ma'am, done. Done? Very good. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Then the next is, here are 3 reactions to the language policy followed in India. Give an argument and an example to support any of these positions. Can you read? अभिषेक, आप पढ़ सकते हैं बेटा? Ma'am, I can मैम read. मैम I have ऑडी got कहिए, all मैम the- ऑडी कहिए, तब क्या समझ में भूमिका? आएगा पढ़ो, उससे. पढ़ो, पढ़ो, book मैम, में मैम मेरे Yes, पास मैम बुक yes, नहीं है. ma'am. हाँ, पढ़ो बेटा. Ma'am, I got my book. Okay, पढ़ो. Sangeeta, the policy of accommodation has strengthened national unity. Arman,
language-based states have divided us by making everyone conscious of their language. Harish, the policy has only helped the consolidate the dominance of English over all other languages. कह रहा है ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं और सपोर्ट हैं लैंग्वेज पॉलिसी को लेके। वही संगीता कहती है पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथन्ड नेशनल यूनिटी। वही हमने जो है इंग्लिश को भी अकोमोडेट करा, हिंदी को भी अकोमोडेट करा और रीजनल लैंग्वेज को भी अकोमोडेट करा। ठीक है। Yes, ma'am. अरमान कहता है कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। कह रहा स्टेट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बने तो कह रहा है सबने अपनी लैंग्वेज के प्रति लोगों को कॉन्शियस कर दिया। भाई दे आर मोर Yes, इनटू ma'am. देयर लैंग्वेज। जैसे आप साउथ में जाओ तो दे प्रेफर यू नो स्पीकिंग देयर ओन रीजनल लैंग्वेज देन एनी अदर लैंग्वेज, राइट? Right. हाँ Yes, ma'am. हाँ। फिर वो कह रहा है, हरीश कह रहा है this policy has only helped to consolidate the dominance of English over all other languages. Other languages. हाँ, कह रहा है कि भाई ये जो पॉलिसी है जो भी गवर्नमेंट की है लैंग्वेज पॉलिसी, उसकी वजह से जो इंग्लिश डोमिनेंस था वो तो एज इट इज रहा। तो अब आपको बताना है कि जो संगीता ने आर्ग्यूमेंट दिया वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जो अरमान ने दिया वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, या जो हरीश ने दिया वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है? Yes. Ma'am, Sangeeta, the policy of accommodation mentioned by Sangeeta. हाँ मैम हरीश। नहीं, अच्छा हरीश का क्यों? कार्तिकी आप हमें रीजन बताओ। हरीश तो कह रहा है कि मैम- भाई डोमिनेंस बता रहा है, वो तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है पॉलिसी को। मैम अच्छा लगा उसका। अच्छा Sorry. अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं भूमिका, आपने बहुत सही बताया कि जो संगीता ने Yes. जो आर्ग्यूमेंट दिया वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसका रीजन ये है कि भाई लैंग्वेज जो है केवल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, बट वो हमारे कल्चर और हमारे माइंडसेट को भी तो बताता है ना, बताता है Yes, कि नहीं बताता ma'am. है? और फिर Yes, ma'am. एक हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है। Unity. ठीक है, हाँ Stand. ठीक है, वेरी गुड। फिर कह रहा है अगर हम पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन को नहीं फॉलो करते तो क्या होता, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स बने वो कम्प्लीटली जो है वो हो जाते, सेग्रीगेटेड हो जाते। Separate. हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। तो हमारे जो कंट्री की जो लैंग्वेज पॉलिसी है उसने ये एक अटेम्प्ट शो Yes. करा कि भाई वो दूसरे की उसको भी रिस्पेक्ट पूरा पूरा शो करते हैं, कल्चर को और उनकी जो भी एथनिक डाइवर्सिटी है उसको पूरा पूरा रिस्पेक्ट शो करते हैं, पर साथ ही साथ कंट्री की यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करने के लिए जो रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी। आई होप Yes, ma'am. ये क्लियर है? Understood. Yes, ma'am. यस मैम। ओके इशिका, ma'am. डू यू हैव बुक बेटा? Yes, ma'am. कैन यू रीड नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. The distinguishing feature of a federal government is A. National government gives some powers to the provincial governments. B. Power is distributed among the legislature, executive, and judiciary. C. Elected officials exercise supreme power in the government. D. Governmental power is divided between different levels of government. ठीक है, अब इसमें आपको ऑप्शन आंसर आपने बताया डी इज द करेक्ट आंसर। D. हाँ, गवर्नमेंटल ma'am. पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Government. Yes, ma'am. नेक्स्ट कह रहा है a few subjects in various list of the Indian Constitution are given here. Group them under the union, state and concurrent list as provided in the table. Defense, police, agriculture, education, banking, forest, communication, trade, marriages. कह रहा है इनको segregate करो on the list system. करो। Yes. हारिका? Yes, ma'am. मैम Doing it, कॉन्करेंट क्या ma'am. होता है? कॉन्करेंट बेटा जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो है लॉ बनाती हैं, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट है। ओके मैम। Sometimes I feel okay, what you read in the class you leave it there only, and next time when you come Banking, you know police, recap करो 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 दो बताओ इसका। culture, education,
Ma'am done. Ma'am done. Ma'am, done. मैम डन। ऑडी तुम्हारे पास तो बुक ही नहीं है। पीडीएफ नाम की चीज होती है जो अभी डाउनलोड हुई है। यस मैम। चलो इशिका, मैम आपकी आवाज हल्की आ रही है। हम ये कह रहे हैं यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बताओ इशिका। मैम योर वॉइस इज वेरी लो। Yes, ma'am. बताओ बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, मैम ma'am, in किसको बताना union है? list, आगे वाले बताते हैं। बताओ। ma'am, Ma'am, in मैं बता union list, defense, communication, and banking. banking. मैम एग्रीकल्चर और मैम एग्रीकल्चर ऑल्सो। Agriculture is in state list, ma'am. I think. पहले listen. First of all, you need to tell me the subjects that come under the union list. Defense, communication, and banking. ठीक है. What comes under state list? Police, agriculture, Police, trade. Yes, ma'am. Police, agriculture and Trade, trade. very good. What comes under concurrent list? education, forest, and marriage. Marriage. Very good. Very good. मैम आप बता दीजिए कौन कौन से हैं। सही तो बोला बेटा, जो बोला एकदम करेक्ट बोला, बिल्कुल कहीं से कहीं देयर इज नो मिस्टेक। ओके मैम रिपीट करवा दीजिए इनसे। कार्तिकेय, Ma'am, may I repeat? यस Ma'am, भूमिका। may I repeat? Union list, defense, communication, banking, अच्छा state रुको list, रुको भूमिका, वेट। agri. स्टेट Yes. लिस्ट आर्यन मौर्य विल टेल। आर्यन बताओ बेटा। Police, agriculture, trade. ओके, कॉन्करेंट लिस्ट भूमिका। Education, forest, and marriages. मैम बचे हुए कॉन्करेंट ही हो गए। हाँ बेटा, Education, forest, and marriages. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। से देखा है इन लोगों ने। ठीक है बेटा, बुक में दिया हुआ है सारा, बच्चे थोड़ी मेहनत करोगे, पेजेस Yes, ma'am. आंसर्स। मैम ट्राई कर रहे थे खुद से। ठीक है, Look at the book. एग्जामिन। यस मैम। रीड क्वेश्चन नंबर 10 कार्तिकेय। Examine the following pairs that give the level of government in India and the powers of government at that level to make laws on subjects mentioned against each. Which of the following pair is not correctly matched? बताओ बताओ। Ma'am, Ma'am, D. D वाला- Local Ma'am, D. governments and residuary powers. Ma'am, D. क्वेश्चन नंबर, ओके, D. ऑप्शन 10. ND. ऑप्शन डी इज नॉट D. करेक्ट। वेरी गुड। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट Thank you, ma'am. लिस्ट, सेंट्रल स्टेट कॉन्करेंट। लोकल गवर्नमेंट्स रेजिडरी पावर्स नहीं होती हैं। किसके पास होती है रेजिडरी पावर्स? किस गवर्नमेंट के पास होती हैं? Ma'am, central. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। वेरी गुड।
11th one. Yes, ma'am. हाँ 11th. नहीं पढ़ लेता हूँ. मैच लिस्ट मैं फर्स्ट पढ़ विथ रहा हूँ. लिस्ट. पढ़ो. Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. List 1 Union of the India. Second State. Third Municipal Corporation. Fourth Gram Panchayat. List 2 Prime Minister. B Sarpanch. C Governor. D Mayor. अब आपको मैच करना है यूनियन ऑफ इंडिया का. इसमें ये जो ऑप्शंस दिए इसमें से यूनियन ऑफ इंडिया का लीडर कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर. वेरी गुड. स्टेट का? गवर्नर. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का? मेयर. और ग्राम पंचायत का? मैम सरपंच. बचा हुआ सरपंच. वेरी गुड क्लास, वेरी गुड. सो सी ऑप्शन जो दी हुई है लिस्ट में आपकी बुक में वो करेक्ट आंसर है. ठीक है. कह रहा है कंसिडर द Yes. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पढ़ो. आर्यन. In a चलो भूमिका आप पढ़ो. Yes, ma'am. Consider the following two statements. In a federation, the powers of the federal and provincial governments are clearly demarcated. India is a federation because the power of the union and state government are specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction on the respective subjects. Sri Lanka is a federation because the country is divided into provinces. India is no longer a federation because some powers of the states have been devolved to the local government bodies. Which of the following given above are correct? A, B, and C, A, C, and D, A and B only, A, B, and C only. Which one is the correct option? Ma'am, A and B only. मैम ए एंड बी ओनली. A and B only. Option C is the correct answer. Very good. Very good. Yes. चलो मतलब आप लोग को चैप्टर समझ में आया है कुछ तो, है ना? यस मैम. यस हाँ, मैम. चलिए अब हम आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछें. Yes, ma'am. चलो. नेम द गवर्नमेंट हैविंग 2 or more levels of government. What is it called? फेडरलिज्म. फेडरल गवर्नमेंट. Federalism. Federal government. Then independent states coming together on their own to form bigger units where the constituent states have equal powers is called a dash federation. Coming together. Very good. Very good, Bhumika. Then Thank you. USA, Switzerland, Australia are the examples of this federation. US. Holding together. USA. You. मैम Yes. कमिंग Coming together. Coming together. And India, Spain, and Belgium are the examples of. होल्डिंग Holding together. Holding together. Very good. Why the subjects like defense, foreign affairs, banking are included in the union list? मैम बिकॉज दे आर Big- इम्पोर्टेंट वंस. Because they are important ones and Yes, ma'am. they require a uniform policy Uniform policies. for execution. Very good. Yes. Very good. Now the next question is, in case of clash between the laws made by the center and a state on a subject in the concurrent list, whose law will prevail? मैम सेंट्रल. Central government. Yes. The case of the law of central government will prevail and that of state will be abolished. Abolished. Name the Indian state that once had a special status. मैम दिल्ली कैपिटल. That once had a special status.
Ma'am, Delhi, because it is a capital. Delhi once had a special status, or it is given a special status? Given. हाँ तो once तो नहीं ना? Ma'am, Uttar Pradesh. No. बताओ भाई. Ma'am, Ma'am, please repeat the question. Which state has been dissolved? Jammu Kashmir. Jammu Kashmir was once given a special status, but now it has been dissolved to a union territory. Yes, ma'am. Okay. Jammu Kashmir. ठीक है, चलो शाबाश. अच्छा. Which judgment of the Supreme Court made Indian federal power sharing more effective? Ma'am, वो 1992 वाला. No. Ma'am, decentralization. No. याद करो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हमने कुछ बताया था आप लोगों को. याद आया? Ma'am, कौन सा? कार्तिकेय? Anybody of? Repeat करिए. हमने एक बताया था ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में जब 1990 में कोalition गवर्नमेंट्स आने लगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था. क्या था वो? बताओ भाई. Yes, ma'am. याद करो. Ma'am, सेंट्रल स्टेट डिसमिस नहीं कर पाएगा स्टेट गवर्नमेंट को. Ma'am, Supreme Court made it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. वेरी गुड, वेरी गुड. यही था. क्या था मैम? Please repeat. हाँ, that the central government cannot dismiss the state government in an arbitrary manner. Yes, ma'am. Now, which is the highest फोटोग्राफ के नीचे है ये. rural areas? The highest institution of Panchayati Raj in rural area. Ma'am, what? Ma'am, repeat कर दीजिए. Ma'am, please repeat. Beta, the highest institution of Panchayati Raj in rural areas. Ma'am, सरपंच. Zilla Parishad. Zilla Zilla Parishad. Parishad. Very good, Bhumika. Zilla Parishad. And political head of municipality, सरपंच. नहीं ना, मेयर. mayor. Very good. और ग्राम पंचायत का सरपंच. सरपंच. Very good. Very good. Sarpanch. Shabash. Then, how many languages are spoken in India? Ma'am, 22 official. 22. Ma'am,